से धीरे धीरे ये खेती पूरी बिगड़ती जा रही, जमीन बहुत कड़क हो गए, जो उसमें से जो पहले जो उसमें केंचुए थे जैसे जीवाणु थे वो पूरा नष्ट हो गए। हमें आंसू आते हैं और खांसी चलती है, और ऐसे समय से हम कैसे करेंगे, बहुत ऐसे हमको दर्द होता है। यहीं के लोग जो प्लान करने जाते हैं वो उनको भी बहुत सारी वहाँ पे प्लान में दिक्कत होती है। उनको रहने के लिए वहाँ पे रूम नहीं रहते, ऐसे खुले में रहते हैं। This is where Project Jhabua comes into picture. After empathizing with the Bhil community at Jhabua and understanding their problems and assessing their needs, we realized that setting up biogas plants will sustainably solve many of their problems. Conventional fuel sources that are firewood in the case of Jhabua will be replaced by a clean fuel, biogas, which would directly impact the women's health too. Bioslurry obtained will be converted into vermicompost, which is a high quality manure. This would give a significant boost to organic farming in Jhabua. Also, the surplus vermicompost will be sold in the market, thereby providing an extra source of income to the farmers. But this will be only possible when we all come together.